Standing piece of throwing. ODI finishes off and starts. मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। In the past, you've often mentioned that that loss to Bangladesh in 2007 World Cup was very difficult to forget, and it was quite painful. So does this win kind of erase that pain a bit? Well, nothing really erases anything because whatever said and done, we'll still remember the 2007 loss. The reason being, we were playing good cricket, and that was the point where we were not able to qualify for the next stage in the World Cup. So we are all human beings. I know we are professionals, but at the end of the day, we also feel hurt when we have not done well. ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर में फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था. That shows that guy is from a different planet. I said when I saw that picture, right. Today was not the day to do this. To do this. अगर करना है, चाचा के पुत्र ने कह दिया है कि टी-शर्ट चाहिए कोहली की, तो मैच के बाद है माइनस वसीम शाह नहीं है, पर फिर भी दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है. माइनस वसीम शाह नहीं है, पर फिर भी बाकी तो वही है जो हम लेकर गए थे. बेहतरीन दुनिया का क्यों कहते हैं? I'm just asking. कि फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, इसको वनडे में प्रॉब्लम होगी. T20 में आसान क्यों है? 4 ओवर करने हैं और मुझे पता है कि उन्होंने मुझे शॉटिंग मारनी. 2 गेंदें 3 गेंदें चाहिए मुझे, यॉर्कर, बाउंसर और वेरिएशन. बैक ऑफ अ लेंथ जो मैं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट मुझे ये 6 बॉलिंग करके दिखा देना बैक ऑफ अ लेंथ विकेटों में. अब जैसे आज पहला ओवर आया आपका तेज बॉलर है जिसका आप हिडन वेपन कहते हो कि ये मेरा वेपन है, अभी ये इनको तुन के रखेगा, डरा के रखेगा, यहाँ विकेट दिलाएगा. पहले ओवर में 24. Hello, welcome back. That was Dhoni and Wasim, a motivational speech from Dhoni and the observation from Wasim on the last 2 matches. Please add your comment. So today's match, that's India versus New Zealand, expecting a very good match. Both the teams are topping the table with 8 points, and because of a run rate, New Zealand is first, India is 2. So today is the decider on which team will be in the top. On the teams, that's India team expecting a change. That's Hardik Pandya, and that's the New Zealand team. In the last series, India won all the 3 matches, and the one before that, New Zealand won that series. And if you remember 2019 World Cup, New Zealand won. It was not a pleasant one for India. So expecting a very good match. Happy watching. Enjoy. Thanks for support.